Namaste. I'm Sneha Biswas and I'm here again with a new video for you guys. Well, I'm wearing sari today. I love wearing sari though, but the reason is something else. Like it's related to this video. As we say, our Sanskriti, our traditions, and everything is like one of the thing that reflects our tradition is sari, right? Well, let's listen to this poem. It's written by me. I hope you're gonna like it. And this is dedicated to someone. And this is dedicated to actually most of the answers we girl reply to the guys. So let's listen to it. Here I am with blood and flesh. No feelings in, I say, in distress. Well, I'm happy without your presence. It's fine if you can call it nonsense. You didn't feed me when I was hungry. So, you are no one to decide my degree. Well, you can always decide who you are. As far as I know, you are bad at it so far. You call me slut, you call me whore. You call me slut, you call me whore. Do you think these words your mother can adore? Do you think? You ain't God, instead a vain. You ain't God, instead a vain. You have no right to ask my existence. Already you decided that I am a failure. Did you see a life? Isn't it a nightmare? I don't care what you do in your life, but it'll be better if you stay out of my sight. It's good to be self obsessed, but when the mirage disappears, you will face rest. Better wake up, honey. Better wake up, honey. Don't be a cringe against the money. Questioning my upbringing can't bring success to you. Questioning my upbringing can't bring success to you. Do something for your own good, or I'll show a deja vu. I offered friendship which you misheard. I offered friendship which you misheard. So now just go and fuck your thought. Well, this poem was written by me in a very rage kind of mood. I was very much, frustrated, devastated by some things that happened to me since last few days. Well, I'm gonna post it and post it in my stories. You can check it over Instagram. I'll post it tomorrow, I guess. And apart from that, you can just see it over here also. And it's really irritating. Well, these are the things most of the girls face, and this was really weird for me. Okay, I have seen cringy people, but this was really like out of the box because um, he's a guy, like I know him, and he wanted a relationship. Okay, like he asked for it, and I just said that you are not my type. Like everybody has their personal choice. So मैंने बोला that you are not my type, and I don't want to take it further. So he's like, no, I want to try, I want to try. So I gave him a chance, and then also again I said that I don't want. Maybe it hurt his ego or something, I don't know. But then he started all these chaos, and then the thing came on. The most important thing what I'm here for is फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद आई वॉज नॉट सो मच इनटू इट कि ये टॉपिक को मैं इतनी जल्दी इसको इतने सामने नहीं लाना चाहती थी. आई हैड अदर प्लान्स फॉर दिस वीडियो, बट द थिंग हैपेंड दैट changed my mind. I thought no, I should bring this video first. And believe me, I'm having no script, nothing written for this video except this poem. And the scenario is like, after that video, I think 2 to 3 days afterwards, I won't take her name, and totally this video I devote to you, man. I just salute you. And to accept this, it's a very big deal. I'm having a friend, and I know her since quite some years. And actually that day she just told me that man, I need to talk to you. I'm like, okay, say. So then she said that you know what, something happened to me. I'm like, okay, go on. Then she explained something that was not accepted because, like, most of my classmates or my batchmates I have known, or my schoolmates, they were so much aggressive towards wrong things. Okay, but
व्हेन शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग आई थॉट कोई छोटा मोटा केस होगा, किसी टीचर ने उसको कुछ बोल दिया होगा और समथिंग, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. She faced something that is the nightmare for most of us. Okay, what a nightmare can be: getting beaten, getting insulted, getting rejected by a guy, no, getting raped. So she got raped by 4 guys brutally in a place where she didn't know anything. She was going to a tuition, her casual life, and 4 guys came and took her away and then raped her brutally for 2 to 3 hours and then left her to the place where they picked her up from. Well, इस बात पे गुस्सा मुझे भी आया था that she didn't tell it to anyone or something. But see, I would tell you, in India, like it's a survey in 2006, उसके according more than 71% cases of rapes go unreported. Reason I'll tell you, of course, one of the main reason is ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती हो, बट हियर आई डोंट थिंक वो केस होता, बिकॉज एज आई नो दैट गर्ल एंड हर फैमिली दे आर वेरी मच लाइक टोन्ड अप एंड द पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्ट हर अ लॉट. बट यहाँ पे रीज़न कुछ और था. यहाँ पे रीज़न थी हमारी प्यारी सोसाइटी. सी, मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, आप भी सोसाइटी में रहते हो, तो आपको भी पता होगा कि जब तक कुछ होता नहीं है ना, तब तक सोसाइटी इज़ वेरी कूल, लाइक वेरी वेरी कूल. देखो, अब आप डिप्रेशन पे बात करो, आई कैन अश्योर यू, आपके आसपास जितने लोग बैठे होंगे, बी इट एनी वेयर, दे विल कम एंड सब ज्ञान देंगे कि हाँ डिप्रेशन होने से यू शुड सी द डॉक्टर, यू शुड एक्सेप्ट इट. बट वेन एनी वन अराउंड देम फेस इट, they won't come to support, they won't even come to talk about it. Reason, that is why, you know, the reason behind it is, I don't know like what mentality they carry along. As I told in the last video also, whenever I see somebody like down or something, I just go and talk. The reason is, you never know किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है, and who somebody can be so much into vain and into so much of bad thoughts that they can just go and suicide. You never know. So, you know, like I'm just trying my best, my level best to reach out to the person or reach out to the girls. See, I'm not feminist, let me clear you very well. I don't support crimes over anyone, be it male, female, transgender, dogs or anyone, be it animals also, as I said. So the problem here is, उसने क्यों नहीं बताया? When she faced it, I think it was in the month of October, as she told, मैं यहाँ पे थी. अगर उसने मुझे एक बार भी बताया होता, I would have tried my level best, but she was scared. She was scared and she just couldn't console herself to do it. So here we can't blame her completely. अगर उसको पता होता कि वो action लेगी और everybody is gonna support her, तो वो नहीं करती. बाद में मैंने सोचा उसके अंदर एक डर ये भी हो सकता है, एज आई नो उसके डैड ही इज़ इन अ वेरी गुड पोस्ट, सो शी वॉज ऑल्सो फियरिंग दैट उसके डैड के जॉब को हैम्पर ना हो, उसके मम्मी को, क्योंकि ये चीज़ हम देख रहे हैं ये सोसाइटी में. इफ़ एनीवन इज़ गेटिंग रेप्ड और समथिंग, दे डू नॉट गेट द कंप्लीट सपोर्ट. बेसिकली रिश्तेदार सपोर्ट छोड़ देते हैं, दोस्त सपोर्ट छोड़ देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मोस्ट ऑफ देम. सो देखिए, इन सब से बचने का तो एक ही तरीका है जो मैंने फिगर आउट किया है, व्हाट आई थिंक इज़ करेक्ट. फर्स्ट, इसमें भी कंप्लीट सिक्योरिटी आपको किसी में नहीं मिलेगी, आई कैन अश्योर यू. फर्स्ट, टीच योर गर्ल्स सेल्फ डिफेंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ डिफेंस इज समथिंग, आपको, हाँ, अगर बहुत सारे लोग आते हैं आपको बेहोश करके लेके चले जाते हैं, सो दैट्स लाइक उससे प्रिवेंशन का सेवरल तरीका और ढूंढना पड़ेगा. बट बेसिक थिंग लाइक व्हाट यू कैन डू इज़ टीच योर डॉटर्स सेल्फ डिफेंस. जो भी लड़की बाहर जाती है, एटलीस्ट कीप पेपर स्प्रे विथ यू, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स नेक्स्ट, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अवॉइड गोइंग फ्रॉम लाइक प्लेसेस विच आर नॉट सो मच क्राउडेड. बिकॉज मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, मैंने यूज़ टू लाइक ब्रैग अबाउट कि नहीं मैं तो इसको देख लूँगी, उसको देख लूँगी. आई यूज़ टू बी लाइक कि कहीं से भी चले जाएंगे. बट नाउ आई रियलाइज़ कि जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल इट.
बट जब आपके कंट्रोल से बाहर जाती है, 8-10 लोग एक साथ आ गए, व्हाट कैन यू डू? इफ यू आर इन अ वेरी लोनली प्लेस विथ नो पीपल अराउंड, देयर इज नो वे आउट. सो बहादुरी अपनी जगह और दिमाग लगाना अपनी जगह. सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दीज काइंड ऑफ केसेस. क्योंकि आप लड़ बाद में भी सकते हो. इफ़ यू रिकॉग्नाइज दैट आप लड़ बाद में भी सकते हो, पहले यू हैव टू गेट सेव्ड फ्रॉम द प्लेस, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग आपका देखिए, आप बड़े बच्चों में ये चीज़ फीड नहीं कर सकते क्योंकि बड़े बच्चों का एक मेंटालिटी ऑलरेडी बन चुका होता है. सो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, बी इट गर्ल बी इट बॉय, टीच देम. I'm not talking about that teach them sex or rape, what is that? Teach them that harm against anything is wrong. Anything. ये चीज़ अगर आप एकदम बचपन से डालेंगे ना, तो बिकॉज मैं इवन मेरे घर में भी आई गॉट अ ब्रदर, सो आई कांट गारंटी कि वो बड़े हो कैसा कुछ नहीं करेगा. बट द सिनेरियो इज मैं अभी से एज ही इज़ वेरी मच यंगर देन दैट ऑफ मी, ही इज 7 years younger, सो आई ट्राई टू पुट ऑल द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ हिम दैट देखो ऐसा ऐसा होता है एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. सो रॉन्ग और राइट का डिफरेंस करना आना बहुत ज़रूरी है, बी इट अ गर्ल, बी इट अ बॉय, बी इट एनी वन. सो प्लीज़ टीच योर चिल्ड्रन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय, सेल्फ डिफेंस सीखो एंड टीच देम हाउ टू रिस्पेक्ट एनी लाइक एनी बीइंग, be it anyone. And उसके अलावा the only thing I can request that please support your children in these kind of things. If anybody is facing this around you, be it your family member, be it your friends, be it anyone, just go. First of all, talk to them. Second thing is just assure them that you take the step, I'm behind you. And that's it. Thank you so much. We'll meet soon in the next video. Till then, follow my Instagram account, we can talk there. Yeah. And apart from that, next video I think it will be something more interesting.